Good morning, everyone. So students, financial statements, final account. We have completed all the illustrated part, right? The practical portion we have completed. Well, I've told you that we'll do the theory later on. So today we are going to start our theory part, right? Although I have explained a bit in between while explaining the practicals, I have told you its purpose, but let's do it systematically. Financial statements, you must be knowing till date that these statements tell about the financial position and profitable position of the business. How much gross profit is earned by the business, how much net profit is earned by the business, and if we think more, if we go in detail, so it tells about the operating profit also, that how much operating profit means from the operating activity you have earned. And finally, it tells about your position of the business, means how much assets you are possessing and how much liabilities you are having on this date, right? So all these things we have discussed. Okay, so theory part, it's telling that two statements are termed as financial statement. I've told you that statement of P&L, this tells about the profitability position of your business, and balance sheet is your statement, note and account, always remember. Okay, it is position statement, tells about the financial position. Then it's telling about the objectives of preparing financial statements. What are the objectives? Why do we prepare that? So that's very, very clear that we want to know about the true and fair state of your business. Students, if you take your exam, note exam, if you are doing the studies, okay, and if we don't take your exam, then how we can come to know about your performance? If we don't take your test, class test, then also we can't come to know, right? So that is important. After teaching, we take your exam so we can analyze the thing. We can analyze the performance, how much you have done and you are at what level. So in the same way, when we do the business, so at the end of the year, we have decided the small intervals during the process of this business life, okay? That is 1 year and we call it a financial year, okay? So we have given a pause and we calculate how much you have done in the business, okay? How much, either there is a profit or loss, जैसे कि आप class में pass हुए हैं या fail हुए हैं, okay? So that we can come to know. So next it is telling, the first it's telling to present a true and fair view of the financial performance, that's profit and loss, and to present a true and fair view of the financial position. Performance and position. Performance means either there is a profit or loss, and position means how much assets and liabilities you are containing. Okay, now we have the users of financial statement. So we were talking about, now we will start users of financial statement. Although we have discussed, if you remember, do you remember users of financial statements? We have two kind of users, internal and external users. So here they have given combined. Well, the first one is management. Students, management has to take so many decisions on the daily basis, and annually also they decide something. So they need some base, some ground should be there to decide. Facts and figures, some data should be there, and they they have the data from the financial statement. Financial statements provide them all the bases, and they analyze these one and they decide the thing. Either we have to increase the sale, we have to decrease the sale, or like where we are lacking something, where the more expenses are there, which one is the plus point, which one is the minus, and where to work, on which point I have to work. So all these things will be decided by the management on the basis of these financial statements, okay? Then we have investors. Investors are the people who invest money in your business. Here they are talking about company, shareholders, but we can talk in the context of that is partnership also. One person is working, this is sole proprietorship, and they are looking for a partner, they want to expand their business. So the person who wants to invest in your business, they will analyze the things first, and nobody wants to invest in a business which is not profitable, which is in the loss. Nobody wants to invest their money. So these financial statements are the sources to know about the financial position and your profit position of the business. So the person who wants to invest money in your business, they will analyze it and they will come to know.
Next, they are talking about the short-term creditors. So on the basis of the financial statement, they assesses whether the enterprise will be able to pay their debts and no. Well, creditors are the people to whom we have to pay. Means you must have purchased something on the credit basis from these people and now you have to pay. So your suppliers, means from whom you are going to buy something on the credit basis, they will analyze your position. Do you have the sufficient money? What is your position? Will you be able to repay the amount right in time? Only then they provide you the goods on the credit basis. So that's very useful for creditors also, okay? Short-term creditors they have talked. Now long-term creditors, these are the people who provide you finance for the long time of the period, like your bank. If you take loan from the bank, generally we take for the long time of period. So they also study your financial position, and the same thing goes to them also. Are they able to pay money right in time? Okay, only then they provide money to you. Next we have employees and trade unions. Employees, they get their salary, but they get bonus and certain other kind of benefits are also provided to the employees in some concerns. So employees just want to know what is the position of the business. Either business is earning sufficient and will it be able to declare the bonus, or it won't give the bonus. If no profit is there, so that will be difficult for the company to give the increment and bonus and all, okay? So it will pay the salary. So it is important for the employees also to an extent to know about the position of your business, okay? Hanji, are you sure you are not understanding the thing? सच कह रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा आपको? क्या कह रहे हो? आप बुक्का तो बोल रहे हो, उसके बाद भी इंग्लिश में समझा रहे हो, ठीक है। एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन का समझ में आ गया? नहीं आया? उनको अपनी सैलरी, बोनस, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर उनको पता है कि बिजनेस की पोजीशन कैसी है, कितना प्रॉफिट हुआ है, हमें बोनस, प्रॉफिट है तो ही बोनस मिलेगा, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं मिलेगा, तो दैट इज़ गुड फॉर देम। वो उनके लिए सही है कि उनको वो स्टडी कर लेते हैं फाइनेंशियल पोजीशन का, उन्हें पता रहता है, ठीक है? तो वो आर्ग्यू नहीं करेंगे, बोनस नहीं डिमांड करेंगे। गवर्नमेंट के लिए भी ये स्टडी करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना प्रॉफिटेबल है। गवर्नमेंट कैन कम टू नो फ्रॉम द फाइनेंशियल पोजीशन हाउ मच यू हैव अर्न, कितना प्रॉफिट आपने अर्न किया। प्रॉफिट है तभी तो वो आप टैक्स देंगे, ठीक है? आपने कुछ गड़बड़ घोटाले किए हैं, वेदर यू हैव मिस एप्रोप्रिएटेड द अकाउंट और नो, इफ़ यू हैव डन सो गवर्नमेंट इजीली कैन कैच दिस थिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलना है, सही टैक्स है या नहीं है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगती हैं। देन यू हैव द टैक्सेशन अथॉरिटी। So in case of the government, they have said financial statements to study the profit margin of various industries, to announce or withdraw various concessions, and to increase or decrease the excise duty. So regarding the government, they have taken some another thing कि government study करती है कि आपको excise duty किस पे लगती है? प्रोडक्शन पे। जो आप प्रोडक्शन करते हैं, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन करते हैं, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है? पता था या नहीं? कस्टम ड्यूटी लगती है विच यू दैट इज इन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रेड, बट एक्साइज ड्यूटी इज ऑन द प्रोडक्शन। सो गवर्नमेंट जस्ट कम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टैक्सेशन अथॉरिटी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि टैक्स के लिए ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? वो भी गवर्नमेंट का ही एक विंग है कि आपने कितना टैक्स पे किया है, कितना टैक्स बनता है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्टडी करके दे कैन फाइंड आउट द थिंग्स, ओके? सम अदर यूजर्स आर देयर लाइक ट्रेड एसोसिएशंस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्चर्स एक्सेट्रा। सो दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल फॉर दीज पीपल ऑल्सो, ओके? सो इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपके लिए भी बेनिफिट हो सकता है अगर आप बिजनेस से कहीं रिलेटेड हैं किसी भी तरह से। कोई भी काम करने से पहले इफ़ यू गो टू द मार्केट टू बाय समथिंग, सो यू स्टडी दैट आइटम। आप उस आइटम की पूरी डिटेल स्टडी करके जाते हैं। आजकल कंज्यूमर्स आर वेरी अलर्ट, इजंट इट? कंज्यूमर्स अलर्ट है ना? तो इसी तरह से आप किसी कंपनी में कुछ खरीदना है या कोई भी फर्म है सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रही है, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यू विल हैव ऑल द वेयर अबाउट्स, यू विल हैव ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट फर्म, ओनली देन यू विल टेक एडमिशन, ठीक है? तो ये
यूजर्स के लिए फ़ायदेमंद है. Now we will talk about the income statement. What are the income statements? We have a trading account and P&L account. These two statements are your income statement. यानी आपकी इनकम के बारे में जो बताते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं, वो आपकी इनकम स्टेटमेंट है. तो दो अकाउंट है जो आपकी इनकम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते हैं, राइट? गेटिंग? कौन सी है? फर्स्ट वन इज योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड इट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस इफ इट इज देयर. एंड सेकेंड वन इज योर P&L अकाउंट. इट टेल्स अबाउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इफ इट इज. ऑल राइट? So they have taken the trading account. Now we will talk about the need and importance of trading account. Students, I have told you its need and importance. Well, we will study the points later on, but let me know हमें क्या पता लगता है trading account से, क्या जानते हैं? We find out gross profit or loss from this. दूसरा क्या पता लगता है हमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता लगती है कि हमारे जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उस पर डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं. ठीक है? सो नीड एंड इम्पोर्टेंस. द फर्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस. हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ग्रॉस प्रॉफिट वो है जो सेल्स में से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, एंड ऑफ कोर्स परचेजेस तो हैं ही. फार्मूला आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक सेल्स, दैट कम्स योर ग्रॉस प्रॉफिट. ओके? एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप फाइंड आउट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लगती हैं. सेकेंड, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. जो चीज़ें हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल में कर चुके हैं एंड मैं बता चुकी हूँ, वही चीज़ें थ्योरी में करा रहे हैं. डू यू एग्री नाउ कि प्रैक्टिकल पोर्शन इज गुड टू डू फर्स्ट, कि उससे सारी चीज़ें आपको पहले से क्लियर हो जाती हैं. अगर हम पहले थ्योरी करेंगे तो यू विल पुट अप द क्वेश्चन कि व्हाट आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो दैट विल बी डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट इफ यू डू द प्रैक्टिकल द पॉइंट्स विल बी क्लियर. सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज वन विच यू डू एट द टाइम ऑफ परचेजेस. जो हम परचेजेस पे करते हैं खर्चे, ठीक है, गुड्स को परचेज करके अपनी शॉप तक लाते हैं, तो वो कौन से होते हैं? आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. सो आई एम रीडिंग इट फॉर यू. ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द परचेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट इन अ समराइज्ड फॉर्म. शॉर्ट में आप करके उसको ब्रीफिंग में करके लिखते हैं. परसेंटेज ऑफ सच एक्सपेंसेस ऑन सेल्स कैन बी कैलकुलेटेड एंड कंपेयर्ड विद दोज ऑफ द previous year. In this way it enables the management to control and rationalize the expenses. ठीक है? तो आपको पता रहता है, मैनेजमेंट को पता रहता है, इट्स इजी फॉर मैनेजमेंट टू डिसाइड कि कहीं वेस्टेज तो नहीं है एंड मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं और फिर इनडायरेक्ट कितने होते हैं. ओके? सो दीज ऑल थिंग्स आर नोन बाय द मैनेजमेंट. देन वी हैव कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद दोज ऑफ द प्रीवियस ईयर. क्लोजिंग स्टॉक हमें कहाँ मेंशन करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में. नाउ यू हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड ग्रॉस closing stock is given, so easily you can compare this closing stock with the previous year's stock. कि either you had a proper sale this year, कि इस साल हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कम है या ज़्यादा है. ज़्यादा है इसका मतलब आपने कम चीज़ें बेची हैं, या कोई और रीज़न हो सकते हैं, ज़्यादा परचेज है, राइट, एंड ओवर परचेजिंग भी हो जाती है कई बार मार्केट में. सो यू हैव अ होल डिटेल रिगार्डिंग दैट. आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं. यू कैन एनालाइज द थिंग एंड यू कैन रीच एट द कंक्लूजन एंड रिजल्ट कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. नेक्स्ट वी हैव it provides safety against possible losses. If the ratio of gross profit has decreased in comparison to the preceding year, the businessman can take effective measures to safeguard himself against future losses. For example, he may increase the sale price of the goods or may proceed to analyze and control the direct expenses. Yes, it's telling students we have a gross profit and we can compare this gross profit with the previous year. पिछले साल के gross profit से हम compare करते हैं, हमें लगा कि हमारा gross profit इस बार कम है. So this is alarming situation for you, right? Alarming situation means some problems. Okay, maybe the direct expenses are more. तुषार, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है. सो वेल इन एडवांस यू केम टू नो अबाउट इट. आपको पहले से पता लग जाता है, तो यू कैन टेक सम प्रिकॉशन, सम सेफ गार्ड्स यू कैन अडॉप्ट. सो यू कैन डू वॉट, यू कैन इंक्रीज द सेल. आप सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं. आई मीन
सेल प्राइस बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, जिससे आप वो कॉस्ट कवर कर पाएँ, ठीक है। एंड यू कैन बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग द एक्सपेंसेस, कि आप एक्सपेंसेस बहुत ध्यान से करें। तो आपके पास पहले से चीज़ होती है तो यू बिकेम अलर्ट कि ग्रॉस प्रॉफिट कौन सी स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी पेंडिंग है, यू हैव टू डू, सो यू कैन बी अलर्ट इनफ इन द होल ईयर। ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यू कैन हैव अ लिटिल कंट्रोल ओवर देयर, आप उन पे थोड़ा सा कंट्रोलिंग कर सकते हैं, आगे के लिए ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। सो इट प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, so that's all regarding the trading account. Well, they have mentioned the items which we have already done. Okay, I just read it. Opening stock of inventory, these are the debit side item they have mentioned, and they have the purchases and purchase return. पता है कैसे mention करते हैं, so there is no need to explain that. Purchases debit में आती है, return है, purchase return है, तो either reduce from the purchase और दूसरी तरफ दिखाते हैं otherwise. देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या हैं आपके, वेजेस हैं, कैरेज है, कैरेज इनवर्ड और फ्रेट बोलते हैं जिसे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, स्टोर्स कंज्यूम्ड, डॉक चार्जेस, रॉयल्टी, राइट, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. So I'm reading it for you. You had a query. Well, these I'm reading for the carriage inward. These expenses should be debited to trading account because these are generally paid. Yes, please. Generally paid for bringing the goods to the factory or place of the business. Have you understood? फैक्ट्री या आप जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ तक गुड्स को लाने के जो खर्चे होते हैं उसे आप फ्रेट बोलते हैं. However, if any carriage or freight is paid on the bringing and assets, the amount should be added to the assets account and must not be debited to the trading account. Did you understand? किसी assets को लाने के कोई आपने कैरेज वगैरह दिया है तो हम पढ़ चुके हैं जर्नल एंट्री में, जैसे मशीन के लिए आपने लेबरर्स को पे किया तो वेजेस होता है लेबरर को पे करना, बट यहाँ पे हम वेजेस को डेबिट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे. ओके, देन दे आर टॉकिंग अबाउट द dock charges. These are the charges levied on ships and their cargo while entering on leaving docks. Okay, if dock charges are paid on import of goods, they are shown on the debit side of the trading account. In the absence of specific instructions, these are debited to trading account. Students, import क्या होता है, खरीदना, बाहर से खरीदना, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो लाइक परचेजेस. जैसे यहाँ पे आप परचेजेस पे कैरेज इनवर्ड एंड ऑल यू आर पेइंग, सो डॉक चार्जेस विल बी इंक्लूडिंग इन योर परचेजेस. नेक्स्ट इज रॉयल्टी. दिस इज द अमाउंट पेड टू द ऑनर ऑफ माइन और पेटेंट फॉर यूजिंग हिज राइट और पेटेंट. Royalty is usually charged to trading account because it increases the cost of production. However, if it is specifically stated in the question that the royalty is based on the sales, it will be charged to P&L account. Royalty अगर sales पे है तो that will be shown in the P&L, otherwise that will be shown on the trading account, right? ये mines वगैरह हैं उन पे आप लेते हैं and patents using. So they have mentioned the item which we show in the credit side of the trading, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं. ट्रेडिंग में के क्रेडिट में क्या क्या आता है, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री, दीज टू थिंग्स आर देयर. ओके, हाँ, now they have given the format and well regarding profit and loss account, page number 21.13, you can see here need an 21.13. So need and importance of P&L क्यों बनाते हैं, to ascertain the net profit or loss. I think it's very very clear. यहाँ पे हम indirect expenses को minus करते हैं and we find out net profit, either net profit or net loss. Then comparison with previous year's profit, this is also the purpose. Easily we can compare with the previous year. Previous year में जो आपके net profit या net loss हुए हैं तो इस बार कितने हैं, पहले कितने थे, तो easy comparison. Then we have control on expenses. Well, we have seen that gross profit is not sufficient. या आप देख रहे हैं कि हमारा profit, I mean expenses बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, profit कम है, तो आप उन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं. अभी gross profit के टाइम हमने डिस्कस किया था. ओके, आपने कंपेयर किया लास्ट ईयर से, आपको लगा कि इट इज़ वेरी लेस, सो यू कैन कंट्रोल ओवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके, नाउ हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट, ऑफ कोर्स क्वाइट क्लियर. प्रॉफिट एंड लॉस से क्या फाइंड आउट करते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. तो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस से ही हम
लाइक इसको बैलेंस शीट में यूज़ करते हैं, कहाँ करते हैं? नेट प्रॉफिट कहाँ दिखाते हैं बैलेंस शीट में? दोज हु हैव डन added in the capital, net profit is added in the capital and net loss is subtracted from the capital. Okay, so it's helpful to prepare the balance sheet. All right, now we have balance sheet, need and importance of preparing a balance sheet. Why to prepare the balance sheet? This tells about the position, कितनी assets हैं, कितनी liability हैं. बेटा flip over the pages, point 19 पे मिलेगा. So the first one is main purpose of preparing a balance sheet is to ascertain the true financial position of a business at a particular period. Okay, सो अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर डे पे आप प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट, एंड दिस टेल्स अबाउट योर फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपकी क्या पोजीशन है, ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ योर बिजनेस, कि आपके बिजनेस ने सही चीज़ें दिखाई हैं. It helps in ascertaining the nature and cost of various assets of the business, such as amount of closing stock, amount owing from debtors, amount of fictitious assets and all. It tells about the detailed study of the things, कि हमारी overall assets है, उसमें आपकी कितनी करंट है, कितनी नॉन करंट है, कितनी fictitious assets है, तो सारी चीज़ों की डिटेल आपको दिखाते हैं. It helps in determining the nature of amount of various liabilities of the business. Liabilities कितने तरह की हैं, उनमें कौन कौन सी, आपकी टोटल लाइबिलिटी 5 लाख है मान लीजिए बिजनेस की, तो इस 5 लाख में क्या कुछ है, कितनी कैपिटल है, कितनी इंटरनल लाइबिलिटी, कितनी एक्सटर्नल लाइबिलिटी. सो बैलेंस शीट टेल्स द होल डिटेल, एंड well, it gives information about the exact amount of capital at the end of the year and addition or deductions made in the current year, like we have done at the time of accounting ratios. If you remember, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितनी है, फिर साल में क्या नेट प्रॉफिट हुआ, कितनी ड्राइंग्स हुई हैं, कितनी क्लोजिंग कैपिटल है. सो इट गिव्स द होल डिटेल, राइट. कैपिटल के बारे में पूरा हमें पता लगता है. देन it helps in finding out whether the firm is solvent or no. Solvent means either it is able to pay its all its debts, short term debts from its current liabilities from its current assets. It tells about the short term solvency position and long term solvency position of the business. Then it helps in preparing the opening entry at the beginning of the next year. Opening entry पढ़ी थी journal entries में, आपको अभी भी recently कराया था. Do you remember that? कि when you prepare, I've just told you the format of the balance sheet, कि जो assets वाले हैं उनको डेबिट में लिखेंगे, liabilities वाले हैं वो क्रेडिट में. तो बैलेंस शीट भी प्रिपेयर ऑन द लास्ट डे ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर, एंड नेक्स्ट डे आपका नया साल शुरू होता है. तो बैलेंस शीट इज हेल्पफुल टू प्रिपेयर द ओपनिंग एंट्रीज. ओके, आज का जो क्लोजिंग बैलेंस है, कल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस है. ऑल राइट, सो आई एम गोइंग थ्रू दीज. Marshalling we have done, grouping and marshalling. Next one is classification of assets. We have the non-current assets. Non-current assets are those one which are acquired for continuous use and last for many years, such as land and building, plant and machinery and all that. Their use is not confined to 1 year. Okay, their use is for the long time of the period, right? So these are your non-current assets, like land and building, plant and machinery, furniture, fixture, all that. And current assets are those one which are either in the form of cash or can be easily converted into cash within 1 year. Means certain assets are there which we can convert into cash very easily within 12 months. Then we have a liquid assets, we have fictitious or nominal assets. Liquid assets क्या है, very easily these can be converted into cash. Liquid assets are those which are either in the form of cash or can be quickly converted into cash, such as cash, bills receivable, short-term investments, debtors, accrued income, etc. All these things can be converted into cash easily. In other words, if prepaid expenses and closing stock are excluded from the current assets, its balance will be liquid assets. Next year you will study in the ratio analysis, its formula and all that. यानी करंट असेट्स में से सिर्फ 2 आइटम आप माइनस कर देते हैं, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक. तो जो बाकी बची आपकी असेट्स हैं, वो करंट असेट्स जो बची हुई हैं वही आपकी क्या होती हैं, लिक्विड असेट्स हैं. ओके, इनको आप बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाँ जी बोलिए. क्या क्या करंट असेट्स में
कौन सा है करेक्ट? ये नाम है, आई डोंट नो, यहाँ साइंटिस्ट रहेगा। Yes. Next one is fictitious or nominal assets. Fictitious assets are not having the worth. I've told you the example we have taken, that is deferred revenue expenditure. So these are the assets which can't be realized in cash or no further benefit can be derived from these assets. Such assets include debit balance of P&L account and the expenditure not yet written off, such as advertisement expenses, etc. These assets are not really assets but are shown on the asset side only for the purpose of transferring them to the profit and loss gradually over a period of time. Have you understood? ये मैंने पहले भी 2-3 बार आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये एक तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हमें राइट ऑफ करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दिया था, बताया था कि 5 लाख है, 5 साल का बेनिफिट है, तो हर साल 1 लाख आप P&L में दिखाएंगे एंड द रिमेनिंग अमाउंट यू विल बी शोइंग इन द बैलेंस शीट। ओके, सो द पोर्शन ऑफ दिस विच वी आर शोइंग इन द बैलेंस शीट दैट इज योर fictitious assets, ठीक है। Now next we have wasting assets. Well, these are the assets which are exhausted or consumed over a period of time, such as mines and oil well. Students, you purchase a oil well, okay, या माइंस खरीदते हैं तो माइन की वैल्यू है, ओके, कब तक है उसकी वैल्यू और कितनी वैल्यू है। माइंस क्यों खरीदी है आपने? कोल माइंस आर देयर, तो यू एक्सट्रैक्ट द कोल फ्रॉम द गोल्ड माइन है तो गोल्ड वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी बहुत वैल्यू है। लेकिन जैसे ही यू एक्सट्रैक्ट द होल अमाउंट ऑफ दिस assets, okay, so is there any worth of that? There is no value. Half of the amount you have withdrawn, half of the amount of your assets are lying there, जो भी उसमें मेटल है, मटेरियल है, वो है आधा, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, जितना आप निकालते जाएंगे उतनी वैल्यू उसकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो these are also your assets and we call these assets as wasting assets. So these are the assets which are exhausted and consumed over a period of time, such as mines and oil well. Their value reduces through being worked. These also include patents and the properties taken on the lease for a definite period of time. Then we have tangible and intangible. Many times we have discussed the assets which we can see and touch, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो tangible होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो intangible है, जैसे कि goodwill, patent, copyright and all. Okay, so they have taken the differences also. Differences between tangible and intangible. Physical existence tangible assets का होता है, intangible का physical existence नहीं होता. Then non-current versus current. Tangible assets, these assets can be non-current assets और current assets, दोनों तरह की हो सकती हैं। जैसे कि आपका स्टॉक है, स्टॉक क्या है? आपकी गुड्स, tangible है लेकिन current assets है। ऐसे ही आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, tangible है, you can see and touch, but this is non current, लंबे टाइम के लिए, ठीक है। and here these are usually fall in the category of non current assets. जो intangible है, जैसे कि आपकी goodwill है, goodwill is attached to the business only. When you sell your business only, then you can sell your goodwill, so this is non current. Then depreciation और amortization. tangible assets पे आप depreciation charge करते हैं एंड intangible पे आप amortized word यूज करते हैं, जैसे goodwill है, goodwill को write off करना means amortization of the goodwill. Next one, acceptance as security. Lenders accept these assets as security for providing loan, but intangible assets can't be used for that purpose. Okay, well, goodwill को आप कैसे गिरवी रख सकते हैं? It's not that kind of thing. Copyright, patent को नहीं रख सकते, but आपके पास एक land है या प्लांट एंड मशीनरी है, कोई अच्छा सा फर्नीचर है, तो उन चीज़ों को आप गिरवी रख सकते हैं, राइट। यू कैन कीप दीज एसेट्स एज अ मोर्टगेज। ओके, लास्ट वन इज रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर। ड्यू टू फायर, फायर किसको जला सकती है? जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो इनविजिबल है उसका फायर क्या बिगाड़ेगी? ओके, सो टेंजिबल एसेट्स मे बी लॉस्ट ड्यू टू फायर, बट इंटेंजिबल एसेट्स कांट बी लॉस्ट ड्यू टू फायर। ओके, now in the same way we have the difference, classification of the liabilities. We have non current और long term liability. non current और long term means एक साल से ज़्यादा, एक साल के बाद आपको जो भी पे करना है, in the simple language that is your non current. Okay, and current और short term liabilities, these are those one which you have to pay within 1 year, जो एक साल के अंदर आपको पे करना है।
Contingent liability, these are not the liability at this moment, right now these are not the liability, but in future these can be the liability. कोई भी liability arise हो सकती है. जैसे आपने बैंक से BR डिस्काउंट कराया, आपने पैसा यूज कर लिया, BR आपका बैंक के पास है, बैंक जाएगा BP वाले के पास and he will get the money at the right time. But suppose BP holder denies that, okay, जो आपका ड्रॉई है वो मना कर देता है, आपका BR डिसऑनर हो जाता है, then who has to pay money to the bank? I have to pay because I have taken the money. तो ये आपकी क्या हो जाती है, contingent liability है, which is not today. कोई कोर्ट केस है, case is going on in the court today, you don't have any liability, but if you lose that case then you have to pay the compensation. All right, so they have given certain examples of these contingent liabilities for bill discounted, liabilities in respect of a suit pending on a court of law, liability in respect of a guarantee given by another one. All these examples they have taken. Fine, students. And last but not least I'm taking, that is distinction between trial balance and balance sheet. Although both are statement, right, both the things are not an account, so what are the differences? Objective, it is prepared to check the arithmetical accuracy of the books of account. Trial balance से आप arithmetical accuracy पता लगती है, and balance sheet से it is prepared to know the true and fair state of your business. Okay, now information about profit or loss. Trial balance क्या है? It's not possible to have information about the net profit or net loss from the trial balance. It is just a brief of all the account, but your financial statements like balance sheet से आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पता लग जाता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट आप डील करते हैं ना. देन नेसेसिटी, दो डिजायरेबल, इट्स प्रिपरेशन इज नॉट नेसेसरी. ट्रायल बैलेंस कोई ज़रूरी नहीं है, हम बनाते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, बट आप नहीं भी बनाएं तो आप काम चला सकते हैं, आप कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव ऑल द डिटेल्स. ओके, बट बैलेंस शीट को बिना बनाए यू कांट मैनेज द थिंग्स. दैट इज कंपल्सरी फॉर यू टू प्रिपेयर. ओके, headings of its two columns like debit and credit mention करते हैं आप. ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट वी मेंशन. ओके, बट बैलेंस शीट में देयर इज नो सच डेबिट एंड क्रेडिट, वी हैव द liabilities and asset side. All right, period, it is normally prepared every month or whenever needed. Trial balance आप कभी भी बना सकते हैं. I've just told you I've taken 3-4 entries and I've prepared the trial balance. Okay, so whenever you want to match your arithmetical accuracy, you can prepare the trial balance on that particular date. Okay, but balance sheet साल के बीच में नहीं बनाते हैं आप, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है जब आप ये बनाते हैं. Now it is normally prepared half yearly or yearly at the end of accounting period. Then types of accounts, all type of accounts whether personal, real or nominal must be written in it. All accounts we are taking which we have in the ledger, जिनका हमने ledger prepare किया है वो सारे आप लेते हैं, but balance sheet में only personal and real account we take. Do you remember that personal, real I have told you? Now closing stock, normally it doesn't contain the item of the closing stock. ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक जर्नली नहीं आता है, हम लास्ट में, आपको पता है ना, नीचे आप जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे हम देते हैं, एंड इट कंटेन्स द आइटम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. बैलेंस शीट में आएगा ही आएगा. नाउ एडजस्टमेंट्स, इट कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, सो एंड सो. ट्रायल बैलेंस आपने देखा हम बिल्कुल सिंपल वे में प्रिपेयर करते हैं, वी आर जस्ट कैरिंग द बैलेंसेस, राइट. लेजर से आप बैलेंस लेके आ रहे हैं, आइदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दैट्स ऑल, नो एडजस्टमेंट्स आर डन. बट बैलेंस शीट, अभी नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट, यू विल फाइंड दैट बैलेंस शीट में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज योर एविडेंस. So it's not accepted by the court as documentary or as a evidence, but balance sheet can be accepted by the court as a evidence or document of evidence if it is required. All right, so it is accepted by the court as documentary evidence. It's also helpful while making payment of income tax and GST. Fine, students, so that's all in the theory part of your financial statement. Okay, so we have completed this chapter today, and I hope you will also be doing it, and now we will start revising the things. Okay, thank you.